नरेंद्र मोदी जी का और आशा भरी नजर से देखते हैं। भारत का विदेश नीति देश हित में बनी है। पर्यावरण, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आतंकवाद जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आज भारत की राय हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का भी। अमृत महोत्सव का ऊपर भी अमित शाह जी ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 3 मुख्य अंग है। पहले सभी नाम अनाम आज़ादी का सिपाहियों का सम्मान होना। दूसरा, सभी सरकारों का अच्छी कार्य को जनता का समक्ष रखना। और तीसरा, आज़ादी का अमृत काल में हम सब संकल्प ले कि भारत फिर से विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। विपक्ष हमारी इस पहल का भी मखौल उड़ा रहा है, लेकिन जनता उन लोगों को नकार दिया है। तो कुल मिला के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, द विनिंग स्प्रेड ऑफ बीजेपी इन द इलेक्शंस, राष्ट्रपति चुनाव में जो हमने दलित आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार का हिसाब राष्ट्र का सामने रखे, ये सारा मुद्दा पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हम सब सदन का सामने रखे। और चर्चा का बाद और कोई बाकी सारे सदस्य ने भी ये चर्चा में भाग लिया और चर्चा का बाद ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन विथ कंसेंसस ये पारित किया गया। और ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सेकंड किया कर्नाटक का माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने, और मैं भी वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सेकंड किया था। रुक जाइए प्लीज 1 मिनट। राकेश रुक जाइए। हाँ? राकेश रुक जाइए। यस, 1 मिनट रुक जाइए। पहले इंग्लिश में 5 मिनट, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन लेंगे। So as you know that today in the National Executive, Home Minister Sri Amit Shah ji has moved the political resolution. The resolution was seconded by the Chief Minister of Karnataka, Sri Bommai ji, and myself. In beginning of his speech, Amit Shah ji has drawn the attention of recent Supreme Court verdict on the various cases, or basically on the Gujarat riot case, and he has said that Supreme Court has cleared Modi ji completely and also exposed the conspiracy of various individual ideologically oriented media person and NGO who all along conspired to defame Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. He also mentioned that how throughout these years Modi ji completely maintained his silence. He drank poison the way Nilkantha drank poisons during the Amrit Manthan, but he continued to cooperate with the SIT, and he did not enacted any drama when he appeared before SIT the way a certain political leader is enacting drama when he was asked to appear before a lawful authority. Amit Shah ji has also said that whenever there are welfare position or welfare scheme initiated by the government of India, opposition criticize everything. Opposition has criticized GST, opposition has criticized airstrike, opposition has criticized surgical strike, opposition has criticized Ayushman Bharat, opposition has criticized International Yoga Day, opposition has criticized the vaccine for COVID as Modi vaccines, so on and so forth. They have only criticized and opposed
every policy which was initiated for the welfare of the nation. Congress today become only a party of a family. There are demands for internal democracy within the Congress, but Congress is not convening or Congress is not electing the new president of the party, continuing with the interim president, because the family fear that they may lose their position if a election, free and fair election is conducted by the Congress party. Home Minister Amit Shah ji has also said that how Narendra Modi ji has got opportunity to nominate two candidates for the post of president. In the first time, he nominated a Dalit. Second, he is now nominating a Adivasi tribal woman for the post of the President of India. Amit Shah ji has also flagged that how during the 8 years prior to 2014, how country has suffered political paralysis, how extreme regionalism has crippled the country, how economy was devastated. Today, the Prime Minister has the courage to implement schemes for the welfare of the people. He could బ్రేక్ తీసుకున్న అప్డేట్స్ చూద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9. ई हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है. सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 317 इंडिया with our country, with the mainland of India. He could initiate a scheme like Agnipath. He could introduce the CDS post in our defense structure. He has the courage to implement Europe, one rank, one pension. Narendra Modi ji has basically banned import of 3,000 defense items, and also he has, under the leadership of Prime Minister today, India's defense export has gone up by 6 times. Sri Amit Shah ji has also highlighted the recent electoral success of BJP. He has clearly said that the recent electoral victory of BJP has clearly demonstrated that in our country, Jatibad, Paribarvad, and the politics of appeasement has come to an end. That now the era of politics of performance and politics of development has started. He also said that how in the Northeast, the BJP is now actually establish its permanent address. It will be very, very difficult to disclose BJP now. He has said that in Telangana and in West Bengal also, we will defeat family rule and BJP will come to power whenever election will held. He also said that BJP will soon have its government in Bengal, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Orissa. He also highlighted that how in the economy we could reduce the percentage of poverty from 22 to 10%, how health infrastructure has increased during the pandemic period, and also he has highlighted the position of Prime Minister in the global arena. Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is considered as one of the top leaders of the world, and his views on various important world issues like environment, solar energy, terrorism, how his views is counted, and how the other global leaders are waiting to hear the views of our Prime Minister on this issue. He also says that Azadi Ka Amrit Mahotsav, which we are celebrating now, basically the country will pay tribute to our unsung heroes. Country will pay tribute to the heroes of the freedom struggle. During this period, whatever government we had in this country, it is our bounden duty to bring the good works done by every government in the past to the
to actually before the people. And also he says that we must take a vow to make India a Vishwa Guru during the Amrit Kal of our Azadi Ki Amrit Mahotsav. He has says that yes, today the opposition has gone to the extent of criticizing the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, but people of India has already put opposition in their place. The next 30 to 40 years, it will be era of BJP, and country will become Vishwa Guru during the reign of the BJP. So these are the basic points he has mentioned during his One by political one. resolution. Mr. Burjesh Pandey, please. Please, 1 minute, please. Liz Matthew from Indian Express. Honorable Prime Minister has spoken or make various comments during the discussion, and I think he has made various suggestions like bringing the development or bringing the changes of Northeast into the focus of entire country, and he has also suggested the various way how BJP workers should take the message of the achievement of our country to the grassroots level. He has also highlighted that how we should highlight the simple life and the message of Srimati Draupadi Murmu in the public at large. Although we know that electoral college will only vote, but he feels that the message and the story of her struggle should be brought into the limelight. Party should go into the grassroots and highlight about the life of Draupadi Murmu. So he has intervened basically in various stages and advised a lot during the discussion. He has contributed in the discussion. I mean, as you know, that whenever Prime Minister spoke or we discuss in the forum, we always discuss Sabke Saath, Sabka Vikas. So this is the mantra, and obviously this include all sections of the people. Balu Deccan Chronicle. Yeah, on Telangana, party is going to release a separate statement, but generally we have discussed Bangsbat in our political resolution. Home Minister Amit Shah ji has said during this deliberation that this Jatibat Bangsbat is the greatest scene, political scene that has been created or that has been committed in the soil of this country. So he said that now the era of Bangsbat will come to an end, and obviously Telangana will have a new government soon. Rakesh PTI. Neeraj Pandey ABP. गृह मंत्री जी ने बोला कि आज हमारा जो देश इतना साल तक सफ़र किया है उसका मेन कारण जो है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राजनीति. So once we finish these things, the country will not have any kind of
problem and country will immediately march into the road of prosperity. So Home Minister during his speech, he given a clarion call to for the people of country that we should defeat Jatibad, Parivarvad and the politics of appeasement, and we should move to the politics of performance and politics of development. सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। नहीं, आप किसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को? देखिए, तिरंगा में कैसे पॉलिटिकलाइजेशन होगा? तिरंगा में क्या पॉलिटिकलाइजेशन है? तिरंगे में तो कोई पॉलिटिकलाइजेशन नहीं है। देखिए, आज पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हमने ये बात डिस्कस नहीं किया हो, बट हमारा जनरल जो व्यू है, बार बार आज हाउस में आया है कि ये देश को अगर हम विश्वगुरु बनाना है, तब ये देश को जातिवाद, वंशवाद और पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट का राजनीति से ऊपर आना है। तो हमने कोई स्पेसिफिक बात डिस्कस करना या बोलना, इससे ज़्यादा जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत ही तगड़ा रहा, बहुत ही स्ट्रांग रहा कि अभी देश को जातिवाद खत्म करना है, वंशवाद खत्म करना है और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म करना है। ये जो बेसिक टेक अवे ऑफ दिस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन वाज दैट कि देश को अभी इससे ऊपर जाना है। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। देखिए, जब एक पार्टी का पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सरसा होता है तो हम कंट्रीज का मैक्रो बात करता है और उसमें जितना माइक्रो इशू आ जाता है। तो मेनली हमने यही शिनाख्त किया कि अगर देश को हम जातिवाद से बाहर निकाल सकता हूँ, वंशवाद से निकाल सकता हूँ और पॉलिटिक्स का एपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट से निकाल सकता हूँ और कंट्री का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट तरफ ले जा सकता हूँ, then all our problem will be solved. So the basic takeaway from this political resolution is that BJP should focus on politics of performance, politics of development, and we should defeat Jatibad, Vangsbad, Parivarvad, and the politics of appeasement. और यही हमारा आज जो एक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, अगर आप एक शब्द में आप सुनना चाहेगा तो यही सबसे बड़ा मैसेज था। ब्रजेश पांडे, न्यूज एक्स। नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका पॉलिटिकल रिजोल्यूशन से क्या संबंध है, मुझको दिखाई नहीं देता है। आप लोग अभी आप बहुत लोगों का बारे में हम बोला कि जैसे गुजरात का रायट का समय में ऐसा ही बहुत सारे मीडिया क्वेश्चन पूछा था और 20 साल का बाद ऐसे ही मीडिया का बारे में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी किया। तो हमारा जो इशू है, मैक्रो इशू में हम बात कर रहे था कि देश को जातिवाद से ऊपर ले जाओ, देश को परिवारवाद का ऊपर ले जाओ। स्मृति काक, रामचंद्रन। मैंने 18 साल पहले का बात किया हूँ, आज का बात नहीं किया हूँ मैंने। I am talking you about 18 years back. स्मृति काक, रामचंद्रन, हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए, अगर आप अमित शाह जी का स्पीच का मैंने जब आप लोग का सामने जिक्र किया तो अब आप लोग का एक आइडिया हो ही गया है कि उनका डायरेक्शन क्या था। तो अगर communal politics is what? Communal politics is a offshoot of politics of appeasement.
आप कम्युनल पॉलिटिक्स देश में कैसा हुआ? तुष्टीकरण का राजनीति से ही हुआ. सो अगर हम तुष्टीकरण का राजनीति को खत्म कर देता हूं तो कम्युनलिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा. ये तो देश में कोई कम्युनल राजनीति करना चाहते का, सब तो चाहते कि मेरा रोजगारी हो, मेरा अच्छा जीवन हो. ये पॉलिटिक्स सब तुष्टीकरण जब खत्म हो जाएगा तो ये सारा इशू अपने आप खत्म हो जाएगा. यही हम लोग का मानना है. मौपिया नंदी 24 घंटा. नहीं, अमित शाह जी ने बोला है कि अपोजिशन हैज आल्सो क्रिटिसाइज सीए. तब उनमें पूरा सारे जो लिस्ट दिया कि आज देश में जो भी अच्छा काम हुआ है, सारे अच्छा काम को opposition has criticized, and on this list he has also mentioned CA. So thereby आपको you can always conclude. I think in this entire speech he has flagged CA as a part of our achievement. So the time will come and he will decide the time, but CA का ऊपर हमारा जो प्रतिबद्धता है इसको उन्होंने दोहराया. पीयूष, रिपब्लिक टीवी. देखिए, मैं तो उसका ऊपर हमारा जो क्लैरिफिकेशन आना है तो आ ही जाएगा. बट बेसिकली मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हम ये इतना बड़ा देश है, सारे बात हम इंसिडेंट वाइज इंसिडेंट वी कैन डिस्कस. But the issue is, what is the root cause of it? अगर कांग्रेस ने ये देश में तुष्टीकरण का राजनीति का शुरुआत नहीं करता था, today we would not have discussed anything like Udaipur or any incident. So, in this platform where we discuss macro things and guideline for the next, till we come for the next executive, Amit Shah ji has clearly indicated, our political resolution has clearly indicated that we have to work continuously to free this country from the politics of appeasement, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद. बाकी सारे जो आप इंसिडेंट का नाम आप लेगा और काल भी होगा, कुछ आगे भी हुआ है, हम तो इंसिडेंट वाइज इंसिडेंट we can discuss, but what is the root cause of it? When this kind of gathering happens, we basically discuss the prescription, how to overcome, how to take country out of all these issues. विकास चंद्रा, न्यूज नेशन. Today, Karnataka CM Bommai ji has also discussed elaborately about the politics that is happening in the south. He has also briefly mentioned that rising of various fundamentalist organization and how Congress is trying to जातिवाद को एक चरम सीमा में ले जाके एक जाति का अंदर में भी, और how they are trying to create more जातिवाद. So basically we discuss about the situation in southern state, and the hope in the entire house is completely in a positive mood. The delegation from our South Indian state strongly believe that we are going to have a major breakthrough in South India soon, be it in Telangana, be it in Tamil Nadu. The next growth area of BJP will come from South. That is the collective hope and collective findings of the house. रत्ना सियासत. During the deliberation, आर्टिकल 370 का बारे में चर्चा हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का बारे में भी चर्चा हुआ. Generally, women empowerment, which include everything. So, women empowerment का बारे में बहुत अच्छा चर्चा हुआ, और जो भी
वुमेन एम्पावरमेंट का जो भी ऑब्स्टैकल्स है उसको हम लोग को रिमूव करना है. दैट इज द व्यू ऑफ द हाउस. एंड as I told you that in this entire political resolution, more and more macro things has been discussed. पायल मेहता. Look, basically when I seconded the political resolution, I seconded whatever has been said by Home Minister in the floor of the House. So Home Minister himself mentioned about the Northeast, and he has also said that how now BJP has permanently come to stay in the Northeast, and how during the post 2014, how Modi ji has actually initiated a huge development activities in the Northeast. We discussed about removal of APSA from the 60% area of Northeast. He also said that by 2024 there will be no fault line which will be there in the Northeast. He has said that हमें Northeast का सारा समस्या 2026 का पहले हम लोग समाधान करेगा. ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज. देखिए, हमने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में देश का इंटरनल सिचुएशन का इंटरनल जो हमारा सामने चैलेंजेस है इसका बारे में होम मिनिस्टर ने बताया. लेकिन मैं आप लोगों को यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक इतना बड़ा पॉलिटिकल एक एग्जीक्यूटिव होता है, वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट्स, पार्टी प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, एवरीबॉडी कम्स, we discuss macro things, we do not discuss micro thing. So ये प्रस्ताव में काफ़ी सारे बात रखा गया, through which we can create a strong and robust internal security or environment in the country. But सारे discussion हमने macro level तक रखा. Micro level तक लोगों ने जो इतना बड़ा जो एक गैदरिंग होता है और which is the highest body so far as BJP is concerned, तो हमने माइक्रो लेवल का डिस्कशन को बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ. वी टॉक अबाउट मैक्रो, एंड मैक्रो लेवल में फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, अपीजमेंट, ऑब्वियसली एवरी इशू वी हैव डिस्कस्ड. पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स. देखिए, मैंने इतना ही बताया कि अमित शाह जी ने बोला कि राजनीति में हिंसा खत्म होना चाहिए, तो मैंने उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछा, बट दिस वाज पार्ट ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल रिजोल्यूशन. देखिए, मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम इंसिडेंट वाइज डिस्कस करूँगा तो दैट वाज नॉट द मैंडेट ऑफ दिस हाउस. नहीं, देखिए, जब मैक्रो लेवल में वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, we talk about Tushstikaran, we talk about fundamentalism, and we talk about taking the country to the politics of performance and politics of development. I think you can deduct by yourself that what BJP wants to do in next 10 years, 20 years, 30 years. हमारा country में, देश में दो ही politics होना चाहिए कि भाई आप perform करो और सरकार चलाओ, देश में डेवलपमेंट करो. तो these two are the basic buzzword in the entire deliberation, that BJP wants to create an environment in this country
which will be centered around politics of performance and politics of development. No appeasement, no Jatibad, no Bangsbad, no Parivarbat. बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आने वाले हैं माननीय हेमंत जी। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आज़ादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। इस पहल का भी मखौल उड़ा रहा है, लेकिन जनता